Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel, and in today's video I'm going to test out another foundation, and this is Forever52 Pro Artist Foundation. इनकी मैंने एक और foundation review की हुई है, वो आप देख सकते हैं. I'll be putting a link over here so you can just check it out. एंड वो बेसिकली थोड़ी इससे कम रेंज की है एंड मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी थी. यू कैन चेक अ डिटेल्ड रिव्यू अबाउट इट, बट वो दैट इज़ मोर ऑफ देयर लाइक बजट फाउंडेशन, तो वो डेली यूज़ के लिए आप कह सकते हैं कि है. बट दिस इज़ देयर प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन, वेदर इट इज़ अ गुड फाउंडेशन फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट और नॉट, सो आई विल बी चेकिंग दैट. तो मैं अपना जो रिव्यू करूँगी उस पर्सपेक्टिव के साथ करूँगी कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये फाउंडेशन कैसी है कैसी नहीं. And this is ultra definition and it is liquid foundation and it retails for 1649 rupees, and जो आपको product मिल रहा है that is 60 ml of product which is actually very good. Generally जो product मिलता है वो around 30 ml 35 ml मिलता है, तो product quantity काफ़ी अच्छी है. प्राइस अगर ज़्यादा भी है तो आपको product भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है. एंड जो मैंने शेड अपने लिए चूज़ किया है दैट इज़ पीनट पफ 010. आई रियली वांटेड टू गेट 13 लाइक फज, बट वो अवेलेबल नहीं. आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट वांट दिस टू बी वेरी लाइट ऑन माई स्किन. विल सी हाउ इट गोज. सो लेट्स जस्ट चेक आउट हाउ द फाउंडेशन लुक्स लाइक. सो इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग. मिनिमल सा कार्डबोर्ड पैकेजिंग है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है शेड. एंड व्हेन यू ओपन द पैकेजिंग you can see a frosted bottle. It's a glass bottle, so definitely not good for traveling because glass टूटने का डर रहता है. एंड वैसे अच्छी है, luxurious लगती है because glass bottle है and it has a black cap and when you open it comes with a pump which is a good thing. तो पैकेजिंग भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं बोलूँगी, बहुत ही जेनेरिक या फिर नॉर्मल जो जैसी पैकेजिंग होती है वैसी ही है. सो लेट्स जस्ट चेक आउट एंड आई थिंक ये शायद मुझे सूट कर जाएगी. लेट्स जस्ट सी. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट चेक द टेक्सचर ऑफ दिस फाउंडेशन. ओके, सो दिस इज़ हाउ द टेक्सचर इज़. स्लाइटली रनी, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, स्लाइटली रनी है. सो या, सो आई एम जस्ट गोना टेस्ट इट ऑन माई फेस नाउ. सो आई हैव मॉइस्चराइज्ड स्किन विद माई सनस्क्रीन ऑन एंड नथिंग एल्स. सो आई हैव नो कंसीलर, नो करेक्टर, नो प्राइमर, नथिंग. सो हम बिना करेक्टर के, बिना कंसीलर के ये फाउंडेशन टेस्ट आउट करेंगे एंड बिना प्राइमर के भी, ताकि हम देख सकें ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है एज इट इज़. बिकॉज डेफिनेटली यू कैन मेक योर फाउंडेशन मोर लॉन्ग लास्टिंग विद प्राइमर एंड पाउडर्स एंड कंसीलर के साथ आप और उसे फ्लॉलेस कर सकते हैं, बट हम एज इट इज़ देखेंगे कैसी है. सो एक साइड पे आई एम गोना यूज़ दी ब्रश एंड अदर हाफ पे आई एम गोना यूज़ माई ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि हम दोनों ही टूल्स से इसकी फिनिश देख सकें. सो आई एम जस्ट गोना टेक द फाउंडेशन विद इस तरह से डॉट डॉट करके मैं लगा दूँगी. आई थिंक दिस वन इज़ मोर ऑफ येलो टोन. आई एम न्यूट्रल टोन. मेरे पे दोनों ही टोन्स, कूल टोन एंड येलो टोन सूट कर जाता है बिकॉज ऑफ आई एम न्यूट्रल. एंड नाउ आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट विद द ब्रश. सो जितनी भी एक्सेस थी यहाँ पे मैंने ब्रश में ले ली है फाउंडेशन. नाउ आई एम जस्ट गोना स्टार्ट blending. Yeah, it's very yellow tone. I think I'm turning orange, but it's okay. We can work it out. It's darker. It's darker than my actual shade. Actually, I was afraid कि कहीं लाइट ना हो, बट ये डार्क है. तो 13 फज मुझे ज़्यादा अच्छा सूट करता है फील, but it's okay. It's gonna give me like that really nice tan look and I'm gonna buff it really nicely. Okay, so this is how my skin is looking. So it definitely covered a lot of things on my face and finish भी मुझे ठीक लगी है, though the color is very dark compared to what my original color is, because I think it's yellow undertone and it's dark, so I'm neutral and a little lighter than this, so इसलिए odd लग रहा है, but the finish is nice. I think अगर मैं highlight वगैरह करती हूँ lighter color से, then it will come out really nice. The shade will work for me, or या फिर it can be my summer shade because I get tan really easily. So the finish is nice and it covered a lot of things. It covered my under eye area as well. It did a pretty decent job. So I don't think so I'm gonna build it up because मुझे काफ़ी coverage इसकी ठीक लग रही है compared to the other side. So I'm just gonna use a beauty blender to the other side. I'm gonna take one more pump and same way I'm just gonna dot dot dot, and I think this can be a really good match to NC42. I used to be NC42 back like 3-4 years back because I was pretty tan that time, and
रेगुलर स्किन केयर से मेरे स्किन टोन में फ़र्क पड़ा है. नाउ आई एम NC40, सो आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट विद द ब्लेंडर नाउ. सो ब्रश से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई थी, मतलब दिक्कत नहीं आई मुझे ब्लेंड करने में. एंड सो इज़ विद द ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर से भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रही है. सो आई थिंक आई लाइक द ब्यूटी ब्लेंडर फिनिश बेटर than the brush, but definitely this is more dewy hydrated look and this is more matte because ये थोड़ा सा dilute हो जाता है इसमें product and you get a water amount a little more, इसीलिए hydrated look ज़्यादा आती है blender से. And with the blender as well it gave me a medium to high coverage and same with the brush. So I'm happy with the coverage. I don't think so I need another layer, and definitely I think ये build हो जाएगी. Let's just check out कि build होती है कि नहीं. I'm gonna take a very small teeny tiny amount of foundation and I'm gonna try cover a little bit under my dark circles. So definitely the coverage is improved, so it is buildable. Here I'm just gonna use the only thing is I'm looking pretty dark compared to my original color. Dark है तो थोड़ा सा neck पे भी ले जाना बहुत ज़रूरी है. Otherwise if you're matching really good, I sometimes skip doing my neck if you're matching really good. But this is off. The color is definitely off. But I'm not going anywhere. I'm just testing this foundation. तो गर्दन पे ले जाना है मैं इतना भी ज़रूरी नहीं है. But जो भी बचा है, I'm just gonna take it to my neck as well. Alright, so this is how my skin is looking after application with brush and blender. I like the blender side more. Brush side भी अच्छी है. It gives you much more matte finish. And blender के side पे आप देख सकते हैं it's very nice dewy hydrated look. So I like the blender look better than the matte one, at least for this foundation. And coverage भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे. It covered pretty nicely my under eye dark circle. It covered nicely without any corrector. And the only thing is the color is a little off, but we're gonna make it work. और अगर ये मुझे foundation as a foundation अच्छी लगी, I'm definitely gonna order my color foundation because अभी तक मुझे इसकी finish अच्छी लगी है. It is very lightweight. I don't feel that I have makeup on. And yeah, so I'm just gonna test it out. And right now it's 10:56, 11 बजने वाले हैं. And I'm just gonna do my full face makeup and then I'll be back and we'll do some transfer tests. So guys, I'm back with full face makeup and right now it's 11:04 and it is looking really nice. The makeup is looking really nice on the foundation and ये बहुत ज़्यादा odd नहीं लग रही है अब. It actually settled on my skin and looking really nice. It is looking my color only, but एक shade lighter भी चल जाता what I feel, and I don't feel it oxidized अभी तक at least, because it is looking quite nice on my skin. It is looking my skin color, so I'm happy with the color as well as of now. I just hope it doesn't oxidize more या फिर और आगे ना oxidize हो. But the blush is sitting on my skin really well and the overall look is looking really nice. And let's do the transfer test now. So I am expecting कि ये थोड़ी सी transfer proof हो and थोड़ी सी long last कर because it's a professional foundation. So I'm just gonna do the transfer test here and I'm gonna press against my skin really nicely and I'm just gonna see. Okay, so it did transfer, but it's not a lot, which is good. I was expecting a much more transfer than this, but बहुत ज़्यादा नहीं है. And I think with good primer and with good setting spray, it will be more transfer proof. But as a foundation as well, it's looking really nice. I'm happy right now how the finish is looking, how my makeup is looking over this foundation. And transfer test भी I'm satisfied with it. It's not too bad. And yeah, अभी 11 बज रहे हैं. I'm just gonna see you after a few hours and I just hope it doesn't oxidize and I think it will be my summer color for sure. Yeah, and I will be seeing you after a few hours and see how the foundation goes. I'll be shooting some more videos, some reels. Yeah, so I'll see you soon and we'll check this out and we will test the longevity of this foundation. Hi everyone, I am back and it's about to be 4, so 3:48 हुए हैं. Almost I can say it's been
5 hours since I'm wearing this foundation, so let's just have a closer look to this foundation. So आप दूर से देख सकते हैं, it's looking nice, it's looking fine, but one thing I am actually feeling is that मुझे बहुत अपनी जो फेस है वो थोड़ा खिंचा खिंचा लग रहा है. That means it is going towards dry. Feel हो रहा है खिंचा खिंचा. So yeah, that's one thing, and now we'll see it closely how the foundation looks like and what are my takes on it. Okay, so I can see that there are very prominent fine lines, creases. बहुत ज़्यादा तो नहीं है, दूर से नहीं दिख रही है, but if I see closely then you can definitely see there is prominent smile line. Again दूर से नहीं दिख रही है, but when I see in the mirror closely I can see it. And the nose से ना बिल्कुल foundation जा चुकी है, like bridge of nose, it's all gone. I can literally this is like my bare skin. You can always see the color difference because this is actually the neutral tone जो मेरा actual skin color है. There is no foundation on the bridge of the nose. मुझे यहाँ से ना इस एरिया से भी अपनी जो फाउंडेशन है केकी लग रही है, ड्राई लग रही है. There is a dry patch. अभी फिलहाल I don't know, that patch is gone. I noticed a dry patch here as well, but now I am not able to see it. Yeah, but it is giving me those dry patches here and there, and bridge of nose से totally foundation जा चुकी है. Well, that was actually not what I was expecting because it's their Pro Artist foundation. Because I really love their other foundation which is a little cheaper than this, तो मुझे लगा था उससे बढ़कर ही होगी. And I think वो भी I love wearing it in winters, so ऐसा भी नहीं है कि winters में मैं यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है. Because I feel it's more drying, it's more good for the oily skin people. या फिर ये humid या summer weather में काफ़ी अच्छी जाएगी because इसने with time मेरी skin थोड़ी dry की है. सर्दियाँ हैं अभी, and I did had a moisturizer on, a good moisturizer on underneath, but still I can feel my skin is feeling dry and there are dry patches here and there. That's what I have to say right now. I think अगर आपको इसको सर्दियों में यूज़ करना है, you really need a thick and a very good moisturizer underneath your makeup. And if you're dry skin, then you really have to be cautious using this foundation in winters, I would say. हो सकता है गर्मियों में मेरा थोड़ा सा point of view change हो इस foundation के लिए, but अभी तक it's quite drying. That was my observation in these 5 hours. और ये observation मैंने around after 2-3 hours ही कर ली थी. I didn't get a chance to come here and update you guys, but yeah, it's about to be 4 and I will be coming after a few hours and then I'll be sharing more update about this foundation. As for now, I feel it a little drying, but cheeks वगैरह पे, forehead पे अभी मुझे सही लग रही है, but it is giving me dry patches around my mouth and a little bit of here under eyes में crease lines आ रही हैं, smile lines आ रही हैं. So yeah, so I'll be checking with you guys after a few hours and then at the end of the day. Hi everyone, I'm back और अभी टाइम हो रहा है, it's 6:50, 7 बजने वाले हैं. It's been 8 hours since I'm wearing this foundation. Yes, and this is how it's looking दूर से. And दूर से ये बहुत अच्छी लग रही है, so I'm just gonna see it up close and see how it's behaving. Okay, so जहाँ से foundation निकली है वहाँ से तो निकली है, no change. But honestly now dryness मुझे कम लग रही है. I think I was sitting in the heated room, like heater on था, and I felt that you know जैसे थोड़ा सा oil produce हो रहा है skin में, and that actually made the foundation feel more better. Like अब वो dry खिंची नहीं लग रही है. And also जो patches मुझे लग रहे थे dry, वो भी मुझे लग रहे हैं काफ़ी हद तक settle हो गए हैं जब oil produce हुआ. दूर से it is looking really nice अभी भी. I know the lighting is not right now, but it was actually looking really nice in person when I was seeing in the mirror. Yeah, और जो smile lines भी मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, वो भी settle in हो गई हैं when there was some oil, you know, from my skin. So definitely I can say this is not a foundation for dry skin people अभी तक, and it is not a foundation for winters. अभी तक तो मैं यही बोल सकती हूँ. बाकी I will be checking with you guys after maybe 2 hours and then I'll share my final verdict about this foundation. Hi everyone, I am back और अभी टाइम हो रहा है 10:02. It's been 11 hours since I'm wearing this foundation.
So let's just do a close-up and see how the foundation is looking. Okay, so there's no foundation on nose. This is my bare skin. I can actually see my bare skin. And मुझे ना खिंचाव फिर से लगने लग गया because you know I was out of the room and I was working in the kitchen, so it was cold. So वो खिंचाव जो ड्राइनेस वाला है ना वो फिर से लगने लग गया है मुझे. एंड अदरवाइज इट्स लुकिंग फाइन. या अदरवाइज जो थोड़ी सी क्रीजेस पड़ी थी अंडर आइज में वो वैसी की वैसी ही हैं, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई हैं. स्माइल लाइन थोड़ी बेटर लग रही है अब, बट या अदरवाइज आई नोज़ के आसपास से फाउंडेशन भी निकल चुकी है. यहाँ थोड़ा केकी था बट फिर सेटल डाउन हो गया था एंड अभी भी स्लाइटली केकी है, बहुत ज़्यादा नहीं. या सो दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग फ्रॉम फार and this is how my skin is looking from close. So it's still covering a lot of things. तो coverage इसकी अभी भी बनी हुई है, टिकी हुई है, so that's good. So here's my final take on Forever52 Pro Artist Foundation. I would say it's not a foundation for winters and it is not a foundation for dry skin. अगर आपने winters में use करनी है, make sure you're not a dry skin. You are combination or oily skin and you are using a very good thick moisturizer underneath. तभी ये आपको एक अच्छा लुक दे पाएगी. एंड बीच बीच में अगर आप हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज़ करें दैट्स अ बेटर थिंग. आई एम टेलिंग दिस अकॉर्डिंग टू अ मेकअप आर्टिस्ट. अगर मेकअप आर्टिस्ट को ये यूज़ करनी है तो क्या करना चाहिए. आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन पीपल स्पेशली इन समर्स बिकॉज ये खुद को इसने बिल्कुल मैटिफाई कर दिया था. एंड सेटिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं लगी. ये विदाउट सेटिंग पाउडर भी कहीं ना कहीं से ड्राई पैचेस आ रहे थे एंड केकी हो रही थी. सो दैट मीन्स इट विल वर्क रियली गुड फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन एंड इट विल वर्क रियली गुड इन समर्स. सो अभी तो सर्दियाँ हैं. आई रियली डोंट वॉन्ट टू use this foundation, but definitely as the summers will come I will definitely try this foundation again on my face, do a full wear test and I'll let you know how it works in the summer, but definitely not a foundation for winters. I think I love their cheaper foundation much better for winters than this one, but I am sure कि I will be able to make it work. It's not bad, but the thing is it's not for all skin types. You have to choose this foundation only if you are oily and combination skin. Dry skin है तो you need good thick moisturizer underneath, otherwise it can give you dry patches. So that's what is my take on this foundation. I really feel that I prefer their cheaper foundation than this, though this was a pro one. But yeah, we'll see कि ये गर्मियों में कैसी रहती है. I'm sure it will work good in summers. So it's expensive but you're getting a good amount of foundation. The quantity is good. It is a summer foundation and it is for oily combination skin people. So yeah, that's what I think about this foundation. So I hope ये आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा and it was helpful for you. And that's it for the video. Let me know आप next कौन सा foundation review देखना चाहते हैं on my channel, and if you're still not subscribed to my channel, click this button, help me grow, and I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy and stay safe. Bye bye.